or not? If I'm audible, anyone can write in the chat box. Okay, thank you. And what about the video? Is it clear? Whether the video is clear or not? Thank you, students. So today we are going to discuss first part, that is mole concept, and after the break we are going to discuss the concentration units. Okay, so we are going to start with the mole concept. So what is mole or what is mole concept? So mole is coming under one of the unit. Then tamane physics already पढ़ी सारिबनी units and dimension chapter. Okay, so mole is nothing but one of the unit. What do you mean by unit? Unit कहले हम कौन बुझे? So unit माने it is the standard of measurement. Unit means it is the standard of measurement. ଯେମିତି ତମ different unit system ଅଛି, MKS, CGS, FPS. So MKS meter kg second, CGS centimeter gram second, FPS foot pound second. जब हमें ये तीनटा unit system देखिवा, so in these three there is no place for the mole. जब हम कहले ठीक है bro, mole is one of the unit, but एठी ये तीनटा system रे mole तो नहीं. ताले mole को unit system रे अछि. आ तमे जानछो ये तीनटा system only quantity, length और time ये तीनटा को measure करिछि. MKS हो, CGS हो और FPS हो. जेन हमर रहिला आउ किछि different physical quantity रहिला, temperature, then हमें कहि परिबा current, intensity. So ए सब को हमें measure करिया पय MKS, CGS की FPS ए तीनटा system insufficient. ताप हम कोन help नउचे? SI unit system नउचे, international standards. So SI रे हम कोन आछि ना तम जेंति MKS तो रहिबे रहिबो. तापर करंट को मेजर करिया पे एम्पियर होची, टेम्परेचर मेजर करिया पे केल्विन, देन लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करिया पे कोन रहउची कैंडेला, एंड मोल इज आल्सो देयर अंडर द एसआई यूनिट सिस्टम. बुझि पालो मोल हम कोडी डिस्टर मोल कोडी अछि ना, मोल इज कमिंग अंडर वन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, दैट इज मोल. सो यदि मोल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रे आसुची, देन हम कहबा सपोज सेकंड, व्हाट डज द सेकंड रिप्रेजेंट? The second represent करूची the time. हमें second को use करके time को measure करूचे. Similarly, question पचरा जीवो, what does the mole represent? Mole कौन represent करूची? Mole use करी हमें कौन calculate करी परिवा? कहाँ को represent करी परिवा? Any idea, student? I think तम्मने already किसी न किसी पढ़ी बने. Mole means जन student chat box से लिखिले amount of substance. Okay, any other answer? Okay, again Krishnamay Das, also amount of substance. Ambika Priya Das, that is Pradhan, that is also amount of substance. Any other? Students चिंता करो, यदि हमें quantity of substance को amount of substance को measure करिवा, आपे already हम पाखे अच्छी kg अच्छी, CGS रे ग्राम अच्छी, FPS रे पाउंड अच्छी. ताले हमें kg भी अच्छी, ग्राम भी अच्छी, पाउंड अच्छी, ताको हमें यूज करिके हमें कौन मेजर कर परछे? क्वांटिटी को मेजर कर परछे. तो हमको स्मॉल क्वांटिटी, बेले स्टूडेंट को माइंड रे हमें स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करूचे. सो सबुठा जो देखिबा पार्टिकल भितरे स्मॉलेस्ट मास हैला, दैट इज नॉन अदर देन इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? That is 9.1 into 10 to minus 31 kg. Minus 31 kg. ताठरो lowest mass नहीं. ताल को जब हमें इलेक्ट्रॉन मास को मेजर कर परचे by using kg और ग्राम, ताल आउ ताठरो smallest mass कौन दरकार अछि? नहीं किछि smallest mass. So then एबे चिंता कराउ छी. तामाने certainly it is not the quantity of substance. Quantity of substance है already हमर kg की ग्राम already अछि. We can measure student very small particles like atom molecules using mole. Very small particle माने कौन? तार mass measure करिवा ना तार number को measure करिवा? That is the question. Gayatri Behera.
आमे कौन मेजर करिबा ना ता मास को मेजर करिबा ना ता नंबर को मेजर करिबा यस एनी अदर स्टूडेंट मास को मेजर करिबा स्टूडेंट जेमते एवं कहली मास को मेजर करिया पे स्मॉल मास के स्मॉल पार्टिकुलर मास को मेजर करिया पे हमें केजी की ग्राम यूज करि परछे ताले एठी हमें मोल रखुन तो कोन दरकार अछि टिके आउट चिंता करो समस्त मास ही लिखिछ लक्ष्मण पेय स्मृति ओके गुड एटलीस्ट रेस्पोंड करूछ and our student अछि Xiaomi student please come with your name that will be better शुभश्री मास स्टूडेंट आउ चिंता कर का मास को मेजर करिया पे ऑलरेडी हम पाखरे कोन अछि केजी अछि ग्राम अछि ओके सो मोल जो यूनिट होछि हमें डेफिनेशन तो कहि देबा बट मोल जो यूनिट होछि दैट इज कोरिलेटिंग बिटवीन क्वांटिटी एंड एंटिटी यदि इन जनरल में कहे so it is correlating between quantity of substance and number of entities quantity of substance and number of entities okay so quantity कहले हमें ताको मास नहीं परिबा और हमें ताको वॉल्यूम भी नहीं परिबा और entities कहले it can be molecule it can be atom it can be ion then proton electron न्यूट्रॉन एक्सेट्रा ता माने हम पाक जदी किछि क्वांटिटी अछि जोटा कि मास फॉर्म रे हे पारे और वॉल्यूम फॉर्म रे हे पारे आ तमे एटा भी जानछो मास एंड वॉल्यूम बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू डेंसिटी डेंसिटी इक्वल टू गिवन मास बाय वॉल्यूम ता माने मास की वॉल्यूम दिटा क्वांटिटी रे आसिले जदी हम पाक किछि मास अछि कि वॉल्यूम अछि देन आमे तो एक्सप्रेस करि परिबो इन टर्म्स ऑफ द एंटिटीज एंटिटीज कोन हे परिबो ना इट कैन बी मॉलिक्यूल एटम आयन proton electron neutron किछि भी पारे so that is coming under the entities okay जोटा small particle बोले हमें कहउचे so हम बुझी परलो so ए दिटा भीतर जे इंटरलिंक करूची so that is none other than the mole so बुझी परलो so in general पचरा जीवो definition is different thing in general पचरा जीवो what do you mean by mole the mole is the unit which correlates between the quantity and number of entities present inside it. तार माने कोन सपोज हमको 1 ग्राम आयरन दिया है so 1 ग्राम आयरन रे how many iron atoms are present 1 ग्राम आयरन रे how many electrons are present how many protons how many neutrons सब जिंस हमें कैलकुलेट करि परे बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट सिमिलरली यदि हम दिया है 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया है ऑक्सीजन गैस O2 फॉर्म में रहउची नेचर रे so the 1 gram oxygen दिया है so 1 gram oxygen को oxygen रे how many oxygen molecules are there how many oxygen atoms are there how many electrons protons neutrons are there हमें सब जिंस कैलकुलेट कर परिबे सपोज हमको देइ छी H2SO4 जोटा कि ओटे एसिड अछि जे कि डिवाइड हि जबो टू गिव 2H+ and सल्फेट आयन so H2SO4 सपोज हमको ओटे गिवन मास अछि given mass let's say 5 gram much so 5 gram H2SO4 re how many H2SO4 molecules are there how many H+ ions are there how many sulfate ions are there how many electrons how many protons सब जिंस हमें कैलकुलेट करि परे बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट तो तब वॉल्यूम केमिति ना जनरली हमें वॉल्यूम कहां पे नहीं परिबो कहां भी नहीं परिबो ना प्रेस वॉल्यूम तमारो गैस रे नहीं परिबो सॉलिड नहीं परिबो लिक्विड नहीं परिबो कहां रे वॉल्यूम नहीं परिबो so the volume देइछि किछि 1 लीटर हो कि 1 मिलीलीटर हो so volume रो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब किछि कैलकुलेट करि परे बाय यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट so I hope all of you got मोल कॉन्सेप्ट कहले कोन बुझछो मोल कॉन्सेप्ट कहले मोल कहले ना it is the unit which is correlating between quantity and number of entities present inside हम खाली कहि देले त होबनी हम खाली इंटरलिंक करिवो रिलेट करिवो और ता पे किछि ओटे स्टैंडर्ड थिवा दरकार so standard कोन ताको हमें भी डिस्कस करिया जे
So before going to that, you should know okay. So before going to that, you should know what is the definition of mole. Mole कहले the definition कौन है? ये तो तारो concept रहेगा, the background रहेगा. So definition है so write down quickly. 1 mole of any substance. 1 mole of any substance contains as many number of 1 mole of any substance contains as many number of entities or particles that is equal to the number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope. Number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope. Now एवं देखिए in 12 gram of carbon 12, how many atoms are present? Now that is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Which follow? So 6.022 into 10 to 23 atoms. ताले कितना रहेगा 10 to the 23 atoms. ताले यदि पचरा जीवो how many entities are present in 1 mole? So in 1 mole, this number of entities are present. ताको हमें कहा जाए Avogadro's number, so which is represented as Na or N naught. N or Na or N naught, capital A. Small a कौन है सोडियम है जो. बुझा बोले फ्रेंड. तामाने कौन? ना 1 mole को हाला 1 mole atoms means that is equal to Avogadro number of atoms. 1 mole molecules means that is equal to Avogadro number of molecules. 1 mole electron कहले this is equal to Avogadro number of electrons. एपन बुझा पड़ला. Okay. So this is about the mole. एटा ला definition. हमें जानते कहले जे गोटे substance रे यदि किसी quantity देइछि so quantity रो हम entity calculate करिवा. ता माने electron, proton, atom, molecule calculate करिवा. So there must be some standard. Okay. So in nature, the substances are present basically in 3 forms. Substances are present basically in 3 forms. So what are those? Now it can be compound form, it can be elemental form, it can be ionic form. A compound है पारे, element है पारे, ion भी है पारे. Okay. So nature रे ये तीनटा form रे कौन रहुचंदी? Any substance रहुचंदी. ताले compound थिले, compound रो mass को हमें केमिति लिखिबा? That is equal to molecular mass. Element थिले atomic mass, ion थिले ionic mass. Friend कहलो what is the difference between molecular mass and molar mass? What is the basic रे? Molecular mass और molar mass कहले कौन बुझो? दीटा भीतर difference कौन? एथर molecular mass को हमें ग्राम रे एक्सप्रेस करि दउछे. So that becomes gram molecular mass. So gram molecular mass is nothing but the molar mass. एथर हमें molar mass यदि पचारे जाए what is the molar mass of carbon dioxide? So immediately तम आंसर कोन आछे 44 gram. यदि पचारे जाओ what is the molecular mass of carbon dioxide? That is 44 unit. यदि हम ग्राम molecular mass लिखिबा ताल से 44 ग्राम रे हम ताको एक्सप्रेस करियो. So it is clear. So compound पई हमें कोन लिखिबा? Now for compound we have to write molecular mass. For element we have to write atomic mass. For ion we have to write ionic mass. For ion we have to write ionic mass.
Okay, so compound form रे जोटा more reactive elements अछंती then non-metals रहिले, so those will be present in the compound form or molecular form. Less reactive element, platinum, gold, silver, so those are present in the elemental form. बुझी पारलो? आयनिक फॉर्म रे कोड रहबे ना इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ, इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ सेठी भी आयनिक फॉर्म रे अछंती कि हमें सी रे भी देखिबा जो तब इलेक्ट्रोलाइट्स अछंती और आयनिक फॉर्म रे अछंती सी रे, ओके, जो सॉल्ट अछंती। सो बुझी पारलो? सो मोटामोटी देखिया गले इन जनरल जहां भी हमें देखिबा सब्सटेंस नेचर रे, सो दोज आर बेसिकली प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म्स, दैट इज ईदर कंबाइंड फॉर्म और एलिमेंटल फॉर्म और आयनिक फॉर्म। सो तापे हम डिफरेंट एक्सप्रेस करते डिफरेंट मास ताको एक्सप्रेस करूचे। ओके, सो एपर्यंत स्टूडेंट क्लियर? और एपर्यंत जदि कहार किछि डाउट अछि क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, कमिंग। ओके, एग्जाम रिलेटेड किछ क्वेश्चन बिल्कुल स्टूडेंट आसीबा, कांसेप्ट सरले तापर क्वेश्चन को डेफिनेटली आसीबा। ओके, इक्वल टू परे थिला तमरो 6.022 into 10 to the power 23. Okay, 6.022 10 to the 23. Then so doubt why carbon 12 is taken. Okay, standard eta कहूची how Avogadro's number come. Okay, student, these are all experimental values. एमती नुहे जे कहा गोटे नंबर भल लागिले से नंबर हमें देइछे। ओके, सो जदि हम देखिबा कार्बन 12 एटॉमिक मास हमें जो मेजर करूचे। ओके, सो जेहेतु टाइम कम अछि तंकर हमें डायरेक्ट मोल कांसेप्ट आसीले। सो एटॉमिक मास मेजर करछे, so that is relative atomic mass. So relative atomic mass measure करिया पे our different scale अछि. So first as the hydrogen scale, then carbon, then oxygen scale, then carbon scale. So hydrogen scale केमते ने होइतिला? Now the mass of the substance, that is the number of times heavier than hydrogen isotope. So that the गोटे element नौचे कि गोटे molecule नौचे, so that is 20 times heavier than hydrogen isotope. तार मास कते हैला 20 हैला, काहे कि हाइड्रोजन मास को कंसीडर करथिला that is equivalent to 1. But later it was found that the mass of hydrogen is not exactly 1, rather it is 1.008. So इसलिए hydrogen scale को discard कराइथिला. Then came to the picture, that is oxygen scale. So oxygen mass को 16 consider कराइथिला. तार mass of the substance, that is the number of times heavier than 1/16 part. काहे कि that oxygen mass होची 16, 1/16 part the mass of oxygen. But later it was found that oxygen mass is not exactly 16. केते थिला 15.96 around थिला. ताल से स्केल भी डिस्कार्ड हो गेला. सो तापर से कार्बन स्केल. So mass of the substance, that is heavier, the number of times 1/12 the mass of carbon 12 isotope. Carbon is different isotope अछि. So carbon 12, carbon 13, carbon 14. So 1/12 part जेतिकी टाइम से heavier होबो कार्बन सहित, so that is the atomic mass of that substance. Okay, so carbon 12 isotope को ही standard बोली माना जायछि, that is more appropriate till date. बुझा पड़ला? Okay, so now, so these are the three different forms, that is molecular form है गेला, elemental form हैला और ionic form हैला. So जेते नेचर रे सब्सटेंस असंती समस्त एई तीनटा फॉर्म भितर को ना को फॉर्म भितर प्रेजेंट अछि. Now come to the formula. जदि हमें कंपाउंड लिखिबा, कंपाउंड में कोन ना ग्राम molecular mass of any compound that is equal to 1 mole that contains Na molecule. For example, what compound now को suppose हम नौचे carbon monoxide. So what is the gram molecular mass of carbon monoxide? 28 gram. So 28 gram of CO, that is equal to 1 mole that contains Na molecules. ये compound अछि, so molecules रहिबो. Student बुझा पड़ला? Okay, so this is for the compound. Now come to element.
एलिमेंट बाय को मास लिखिबा एटॉमिक मास सो ग्राम atomic mass of any element equal to 1 mole that contains Na atoms. Okay, 1 mole that contains Na atoms. For example, what a element na ko, let's say magnesium. So magnesium means that is 24 gram of magnesium that is equal to 1 mole that contains 1 mole that contains Na atoms. That contains Na atoms. Now the last one that is ion. So ion पे हम केमती लिखिबा ना same gram ionic mass of any ion that is equal to 1 mole that contains Na ions. For example, what ion now suppose I mean number nitrate ion. So the mass of nitrate ion is 62. So 62 gram of nitrate equal to 1 mole that contains Na ions. Can quickly note कर दियो. So these are the three standards. The compound अच्छी gram molecular mass, element अच्छी gram atomic mass, और ion अच्छी gram ionic mass. Quickly, ଗୋଟେ minute ଭିତରେ ତାକୁ note कर दियो. Okay, students. Up to this clear? Next. Next is them question discuss करेगा. Okay. So question. First question लिखो. Calculate the number of molecules, atoms, and electrons present in 4.9 gram of H2SO4. Okay. Calculate the number of atoms, molecules, and electrons present in 4.9 gram of H2SO4. केतना स्टूडेंट ए क्वेश्चन करि परिबो? Okay, how can we measure ionic mass? जेमते हमें molecular mass calculate करछे, ionic mass सेमते calculate करिबा. Suppose हमु दैछि NH4 plus ammonium ion. So ammonium ion means it contains one nitrogen atom and four hydrogen atoms. Nitrogen atom or mass is 14. Hydrogen mass, each hydrogen atom 1 into 4. That is 4. 14 plus 4 का 18 निकला. बुझा पड़ला? Okay. So जो electron की proton electron थी वो और electron loss है थी वो. Loss means that is loss of electron. तामान्य जो proton आ रही थी. Minus means that is gain of electron. आज जानते electron रो mass होती negligible. So electron add हो कि electron remove हो. So से atomic mass रे किसी तरह एते significant contribution आसीबनी. Okay, atomic mass रे बहुत किसी change आसीबनी. सेतिपई the ion रो mass माने the mass, the sum total mass of the
atoms present inside the ion. Sum total of the mass of the ions atoms present in the ion. Okay, now see. Discuss करियो. Okay. Now को H2SO4 को form रे present अछि. H2SO4 present अछि molecular form. ताले हम कौन लिखिबा ना molar mass of H2SO4 equal to 98 gram per mole. Molar mass H2SO4 calculate करि परियो. 2 hydrogen 2 gram, sulfur 32, oxygen 16 into 4, so it is coming in total 98 gram. ताले हम कौन लिखिबा ना 98 gram of H2SO4 that is equal to 1 mole. Molecule पचारछि, so molecule केते रहइबो ना Na molecules. Okay, so 98 gram equal to Na molecules. 1 gram of H2SO4 equal to Na upon 98 molecules. 1 gram है गला. हम केते कहियर पचारछि ना 4.9 gram of H2SO4 equal to 6.022 into 10 to the power 23 divided by 98 into 4.9. So after divide kara, this will be coming as 20. So 20 means 3.011 into 10 to the power 22 molecules. Student? So you can calculate the number of molecules present inside 4.9 gram of H2SO4. एबे हम कौन calculate करियर अछि ना atoms. तो H2SO4 का molecule तो हम देखिबा गोटे H2SO4 molecule रे केतेटा atom अछंती. Then जेतिक molecule अछन ताको number of atoms सहित multiply कर दबा. तले हम कौन लिखिबा ना 1 molecule of H2SO4 contains 7 atoms. Okay, so total number of atoms केते हिजबे ना 3.011 into 10 to the power 22 into 7. So ताको देखिबा, so that is 21.077 into 10 to the power 22 और जदि हम scientific standard लिखिबा into 10 to the power 23. तो अपन क्विकली नोट कर दियो फटाफट. तापर हमें जिबा to calculate the number of electrons. So अपन नोट कर लो स्टूडेंट. ओके, तापर देखिबा इलेक्ट्रॉन. जब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिबा, सो H2SO4 कथा कहूचे. हमें कहूचे का कथा H2SO4. सो H2SO4 रे फर्स्ट हम कैलकुलेट करिबा जेमते हम एटम्स कैलकुलेट करले सेंते फर्स्ट हम कैलकुलेट करिबा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4. तापर जेतिक मॉलिक्यूल अछि दैट इज 3.011 10 22 मॉलिक्यूल्स अछि. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करि परिबा. ताले H2SO4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केते रहइबा को ना हाइड्रोजन 2 प्लस सल्फर 16 प्लस 8 into 4 और ऑक्सीजन 4 अछि सर 8 अछि. सो 8 into 4 ताले केते हला 32 देन 18 that is 50 electrons. ता माने per molecule of H2SO4 50 electrons are present. यदि per molecule H2SO 50 electron अछंती total number of electron केते हेबे ना 50 into 3.011 into 10 to the 22. एबे निजे कैलकुलेट कर दियो. Total number of electrons equal to 50 into 3.011 into 10 to the 22. सब लिख परिबा.
50 into 3.011 into 10 to the power 22, or 15.055 into 10 to the power 23, or 1 point scientific notation 0.55 into 10 to the power 24. So these many number of electrons are present. Okay, so note कर दिया. Okay, student, I think you got the विश्व का जो student message करथिलो. Okay, तो समझते लिखिलो student. तापर देखियो गोटेटा क्वेश्चन तमे निजे ट्राई करो. Calculate the number of electrons left when 10 to the power 20 electrons are removed from 9 milligram of water. 9 milligram of water. Second question. Calculate the mass of H2SO4 which contains the same number of ions that is equal to the number of ions in 5.85 gram of sodium chloride. Friends, just 2 minutes now. This question calculate karo. Calculate the number of electrons left when 10 to the power 20 electrons are removed from 9 milligram of water. Then calculate the mass of H2SO4 which contains the same number of ions that is equal to the number of ions in 5.85 gram of NaCl. Okay, just 2 minutes now. Quickly try karo. I hope all of you are trying. जहाँ आगे आंसर मिलिबो मेसेज करिबो. So I hope समस्त आंसर ट्राई करछो. Okay, जब न लिखि परछ आउथरे फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट कर दोछि. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हला कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट व्हेन 10 to the power 20 electrons are removed from 9 milligram of water. Second hela calculate the mass of H2SO4 which contains the same number of ions that is equal to the number of ions present in 5.85 gram of sodium chloride NaCl.
ओके फटाफट ट्राई करो लास्ट 1 मिनिट फ्रेंड तापर हम ताको डिस्कस करिबा तो ट्राई कला परे टिके टाइम लागियो जेतु कैलकुलेशन अछि सो सॉल्व कला परे क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स जो मन का आंसर मिलला ओके फर्स्ट आंसर अछि minus 16.02 second is 2.8 gram first answer minus केम देबो स्टूडेंट ओके आउजन गायत्री बेरा लिखले 53.18 into 10 to the power 20 electrons okay let's see any other student टिके टाइम ने फटाफट सॉल्व करो तापर हम डिस्कस करिवा तर सॉल्व न कले डिस्कस कले किछि फायदा हबन तमरो ओके गुड स्टूडेंट रेस्पोंड करछो बहुत भल लागु छी ओके कृष्णमयी 10 1.54 into टिके एटा क्लियर होनी दियो प्रतीक्षा 3011 into 10 to the power 17 आको हमें बेटर लिख परिबा 3.011 10 to 20 ओके का साइंटिफिक नोटेशन से तमे जानछो बिफोर डेसिमल प्लेस गोटे डिजिट रखिबा सो जति तमे ए आंसर पाइजो प्रतीक्षा महापात्र 3.011 into 10 to 20 ओके देखिबा हरप्रिया बेहरा 2.911 in 10 to 21 ओके कृष्णमयी दास 54.207 इलेक्ट्रॉन नहीं आउ थे ट्राई करो स्टूडेंट स्टूडेंट विश्व प्राइवेट मेसेज कले टिके देखिबा माने भूल जाउची ओके सो बेटर तमे जो नॉर्मल जदि एवरीवन जो थिर अछन सेत्रे मेसेज करो दैट विल बी गुड विश्वजीत ओके ओके स्टूडेंट आई होप बहुत स्टूडेंट तम माने ट्राई कलो नाउ एबे we are going to discuss the answer okay Sushil Simran 2.911 into 10 to 21 okay let's see एटी कोन देछि ना 9 मिलीग्राम ऑफ वाटर रु हमें रिमूव करिवा 10 to the power 20 electrons okay so mass of water equal to 9 milligram हमें नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला डिस्कस करने सो हमें तको सही यूनिटरी मेथड करिवा सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम सो हम कोन लिखिबा 18 ग्राम ऑफ वाटर that is equal to 18 gram of water that is equal to Na molecules that is equal to Na molecules okay और गोटे मॉलिक्यूल वाटर रे केते अछंती इलेक्ट्रॉन 18 Na 18 Na electrons okay 8 1 second oxygen 8 okay 10 Na so that is 10 Na electrons means in 18 gram of water 10 into Avogadro number of electrons are present हमें 9 milligram देछि so 9 milligram means 9 into 10 to minus 3 gram of water so that contains 10 into 6.022 into 10 to the power 23 divided by 18
into 9 into 10 to the power minus 3. Number of electrons. So 18 gram, this 1 gram get now 1 gram means 10 Na divided by 18. So 9 milligram means into 9 into 10 to the minus 3. Okay. So this is 2. So 3.011. So that means 3.011 into 10 to the power 21 electrons. So that means in 9 milligram of water, 3.011 into 10 to the power 21 electrons are present. So number of electrons left कितना होगा? Number of electrons left हमको subtract करिया पड़ियो 3.011 into 10 to the power 21 minus 10 to the power 20. So एठी हमें 10 to 20 रे express करिवा 30.11 into 10 to the power 20 minus 10 to the 20. So 10 to 20 common नहीं गले 30.11 minus 1. So 29.11 into 10 to the power 20 और scientific notation लिख ले 2.911 into 10 to the power 21 electrons. Okay, student, first question. So now किसी student लिखी भी थिलो answer first question रो. So केत जनकर answer match करछि 2.911. Okay, good. Smriti. Okay. Second question एबे हमें डिस्कस करिबा. So जो माने first question ठीक रे करि पार नथिलो. Now you can note down the answer quick. तापर हम second question को move करिबा. Complete. I hope all of you have written. पहले बासियो में second question. Now what is the second question? Second question थिला calculate the mass of H2SO4 which contains the same number of ions that is equal to the number of ions in 5.85 gram of NaCl. Okay. So NaCl is given, sodium chloride is given as 5.85 gram. So what is the molar mass of NaCl? That is 58.5 gram. Yes or no? 58.5 gram. So माने 58.5 gram रे number of हमें यूनिटर मेथड करछे तापर हमें number of moles आपरे डिस्कस करियो फार्मूला. सो सेतरा में क्लैरिटी आइबो. Number of molecules in 58.5 gram equal to Na. The number of ions केता होबो? Because NaCl will be dissociated to give one Na plus or one Cl minus. तापर गोटे molecule 2 ions अछंती. ताले हमें देखियो जति की molecule अछंती total 5.85 gram रे. So number of ions इस तरह में calculate करता है. It unitary method. Okay. So number of ions equal to केता होबो? 2 Na in 58.5 gram. The number of ions in 5.85 gram केता होबो? ना 2 Na divided by 58.5 into 5.85. So that is coming 10. So हम लिख परिवा 2 into 6.022 into 10 to the power 22. Okay. So these many number of ions are present. Then same number of ion code is H2SO4. So H2SO4 is dissociated to give 2H plus and 1 sulfate ion. ता माने per molecule of H2SO4 3 ions are present. तो जितनी ion थी वो number of molecules कितना होगा? मतलब 3 divide कर दो. So number of H2SO4 molecule, that is 2 into 6.022 10 to the power 22 divided by 3. Okay. So that is 2 by 3 Na.
2/3 Na molecules. Clear students? एबे हम कौन कैलकुलेट करिबा मास कैलकुलेट करिबा. सो हम जानछे Na by 10 होबे ठी का 10 रो 22 अछि. ताले Na molecules of H2SO4 that is 98 gram. ताले 2 Na by 30 molecules of H2SO4 that is 98 into केते हबो आ कैलकुलेट करिबा divided by Na into 2 Na by 30. So Na cancel hela. So this is 15. So 98 upon 15 gram. Okay. So this will be approximately 6.5 something gram hobo. Then calculate kar dabo. Okay. So 6.5 something gram asjibo. Student clear? ये जन का आंसर आस्तिला. आउ ए क्वेश्चन जदी बुझी न पल्ला आउथरे म रिपीट कर दउछि. So NaCl that is 5. Okay, Smriti. Wait. I'll explain kare diyo. NaCl equal to 5.85 gram. So molecular mass of NaCl equal to 58.5 gram. Number of molecules in 58.5 gram keta asibo Avogadro number. So number of ions keta habo NaCl ro 2 into Avogadro number. So in 58.5 gram of NaCl 2 into Avogadro number of ions are present. Eti kon koichi same number of ions. तामाने H2SO4 number of ions केतला 2 into Avogadro number. Okay. So 2 into Avogadro number divided 10 होगा कहीं कि ना 5.85 अच्छी. So it has लोग कहते 2 into 6.022 10 to 22 or 2 Na by 10. So in one H2SO4 molecule, how many ions are there? 3 ions are there. यदि गोटे molecule 3 ions अच्छी, ताले X number of ions number of molecules केते होगा ना divided by 3. So number of ions केते अच्छी 2 into 6.022 10 to 22 ions. So number of H2SO4 केते होगा divided by 2 3 that is 2/3 into Na by 10. So these are the number of ions or these are the number of molecules. These are the number of molecules of H2SO4 present. Then Na molecules of H2SO4 equal to 98 gram. 2/3 into Na by 10 molecules of H2SO4 केते होगा ना 2/3 10 to the power 2/3 Na upon 10 molecules of H2SO4 that is 98 by Na into this. So आसिला ये approximately 6.5 gram out of second place digit आसिबो तमे कैलकुलेट कर देखि दो. So यदि A related की क्वेश्चन पचार थिलो then यदि बुझी पल्ला then it's okay. Still if you have any doubt एबे तमे क्वेश्चन पचार करियो. Student quick यदि आप पर भी कहा डाउट अछि raise your hand or write in the chat box. Okay, now we are going to discuss the molar volume. We are going to discuss the next topic, that is molar volume. That means volume occupied by 1 mole of the substance. Okay, molar volume means volume occupied by 1 mole of substance. यदि हमें वो substance either solid अच्छी or liquid अच्छी, then its volume can be calculated through density equal to given mass upon volume. So volume can be calculated as given mass of volume. That is, a formula में density through रे calculate करी परिबा. But यदि gas अच्छी, okay, यदि gas अच्छी, so gas रे volume हमें केमती calculate करिबा. We know the volume of the solid and liquid are slightly affected by changing the temperature and pressure. Okay, माने बहुत कम ही change होती, बहुत बेसी change हुए नहीं. हमें यदि temperature slightly change करते 2 degree 5 degree change करते बहुत बेसी change हुए नहीं. कुछ नहीं, solid की liquid रो volume रे बहुत बेसी change हुए नहीं. But चटी यदि हमें gas नबा, gas रो volume largely affected हुए by using or by changing the temperature and pressure. ताले gas रो volume हम केमती calculate करिबा.
So in order to calculate the volume of the gas, am pakhre gote famous equation achi, that is ideal gas equation. Ideal gas equation, so that is PV equal to nRT. Ideal gas equation, that is PV equal to nRT. Okay, pressure into volume, that is equal to number of moles, universal gas constant and temperature. Okay, so lekhi de paribo, what does the symbols represent? P stands for pressure, V volume, N number of moles, N stands for number of moles, and R stands for universal gas constant. Okay, so what are the units of R, or what are the different values of R? So R को मैं लिख परिवा PV upon NT. Okay, R can be rearranged as PV upon NT. So pressure आमे जदि unit नबा ATM and volume रे unit नबा liter, N mole inverse, then Kelvin inverse. So its value will be 0.0821. आमे 0.0821 को approximately 1/12 नहीं परिवा. Easy calculation पे. So 0.0821 को हमें approximately 1/12 नहीं परिवा. So ये ला तुम्हारा गोटे stand R जेटा universal gas constant रो गोटे value. So ये value generally हमारे इटी PV equal to nRT formula रे use होगा. तो other पचरा जीवो P into V, pressure into volume, that is work done. So work done unit कौन है फिर joule है फिर calorie है फिर यो. यदि हमें एक joule unit है नबा, so it is 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. और यदि calorie है नबा, so exactly that is 1.98 calorie mole inverse Kelvin inverse. So 1.98 को हमें approximately 2 बोली नहीं जाओ. Okay, student. Upon the clear. So R value 1/12 जदि 0.0821 को हमें approximate नबा, so it can be 1/12. 25/3 ये भी माने more or less same होगा. Exact value होची 0.0821 ताको हमें shortcut रे कि easy calculation पे हमें use करी परिवा. Okay, so good students. So एटा ला तुम्हारो R different unit और एठी हमारो generally 0.0821 काहे कि ना PV NT हम सब जाको standard value हमें use करूचे. Okay, so ये formula में use करी gas रो volume को calculate करी पारे जदि हम पाखे temperature और pressure अछि. तामे student एठी को हमें एठी देखले कोन ना volume is dependent on temperature and pressure. कहारो gas रो volume is dependent on temperature and pressure. So तामे हमें तो सब temperature pressure formula use करी परिबनी किछि standard values अछि. Standard values कहारो temperature और pressure जाको में NTP और STP बोली कहउछे. So NTP STP condition रे, so what is the relationship between volume and number of moles ताको हमें discuss करिबा. Okay, so तमे जानि छिवो. So एटा formula समस्त note करलो. जानि तो Avogadro's law अछि. Avogadro's law. So Avogadro's law कोन कहउछि ना under identical conditions of temperature and pressure, volume of the gases are directly proportional to number of moles. जदि PV equal nRT देखिबा सेठी यदि हमें R तो already universal gas constant अछि, यदि हम temperature और pressure को constant नै जिबा, so volume will be directly proportional to number of moles. Okay, so that is Avogadro's law. So हम देखिबा student NTP and STP condition. एटा हम standard conditions अछंती NTP and STP. Okay, so NTP normal temperature pressure and standard temperature pressure. So in both the conditions temperature is 0 degree centigrade or 273 Kelvin. So it is also 273 Kelvin. Temperature dita same अछि. Jodi eti pressure NTP रे केता अछि 1 atm and STP रे अछि pressure 1 bar. Jodi हम देखिबा what is the standard unit of pressure. The pressure is force upon area. Pressure is force upon area. So force is Newton, area is meter square. That is none other than Pascal. What is the SI unit of pressure? That is Pascal. So how atm and bar are related to
Pascal. So ATM is 1.01 into 10 to the power 5 Pascal, and bar is simply 10 to the power 5 Pascal. So ATM को हमें लिख परिवा 760 millimeter mercury और 760 torr. आपको हमें लिख परिवा 750. स्टूडेंट चाहिए नोट करि परिवो. These are the different units of pressure. बेले बेले millimeter mercury देइथिवो कि pascal देइथिवो कि torr देइथिवो. So you should know the standards. बुझा पड़ला? So quickly note कर दिया. These are the units of pressure. अच्छा, पहले देखो एनटीपी और एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट अछि. एनटीपी एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर कांस्टेंट अछि. प्रेशर एनटीपी रे 1 atm आउ 1 bar हैला एसटीपी रे. ताले कोठी प्रेशर अधिक अछि? प्रेशर अधिक अछि को कंडीशन रे? प्रेशर अधिक अछि तमरो एनटीपी कंडीशन रे. So what is the relationship between temperature and pressure? Inversely proportional PV equal to nRT. यदि temperature constant है, number of moles constant है, R constant है, PV equal to constant, और pressure is inversely proportional to volume. तामने जोटी अधिक वॉल्यूम रहिबो एटी कम प्रेशर रहबा एंड वाइस वर्सा. सो एनटीपी रे अधिक प्रेशर रहिला काहे 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी एटी 750 मिलीमीटर मर्क्यूरी. यदि दीटा कंडीशन रे आई नंबर ऑफ मोल्स 1 नउचे, दीटा कंडीशन रे नंबर ऑफ मोल्स 1 नउचे, ताले वॉल्यूम केता हो, मोलर वॉल्यूम केता हो ना. हियर अंडर एनटीपी इट इज 22.4 लीटर. तामने हम कोन कहि परिबो 1 mole of any gas, 1 mole of any gas at NTP occupy 22.4 liter volume, 22.4 liter volume. ताले STP रे एबे को STP रे ताटू अधिक हो ना ताटू कम हो. STP प्रेशर कम अछि, so volume definitely ताटू अधिक हो. So volume केते ना slightly greater, that is 22.7 liter volume. ताले हम कहि परिबा at STP 1 mole of any gas occupy 22.7 liter volume. 1 mole of any gas occupy 22.7 liter volume. I hope it is clear to all of you students. देखि दे भले रे हैला. So it is NTP और STP condition. और in general numerical calculation बेल को यदि STP वॉल्यूम देइथो ताकू हमें approximately 22.4 ने गेले approximate आंसर मिल जाय. तदे बहुत बेसी किछि डिफरेंस आसे. So I hope up to this clear. Then एबे हम डिस्कस करिबा how to find number of moles. How to find number of moles. So if there is किसी का doubt अछि, friend you can raise your hand or write in the chat box. Calculation of number of moles, that is N. First, there are 3 formulae to find the number of moles. First, हमर कोन थिला ना 1 mole of any substance contains Avogadro number of entities. Okay. Our thila 1 mole of any substance occupy 22.4 liter. Our formula already to 9th class ro padhi ke asso. So that is very first formula, given mass divided by the compound achi, then molecular mass, the element achi, then atomic, or the ion achi, then ionic mass. So this is the very first formula to calculate the number of moles, given mass divided by molecular mass, atomic mass, or ionic mass. It is the first formula. Second formula kono? The number of entities present divided by Avogadro number. हमें जानचे 1 mole of any substance causes Avogadro number of entities. ताले Avogadro number of entities 1 mole रहिला, तो number of entities केता होबो, number of moles केता होबो, जति की entities present अछंती divided by Avogadro number. So next, 1 mole of any substance or any gas occupy 22.4 liter. So हम कौन लिखिबा volume of gas in liter divided by 22.4 liter.
divided 22.4 liter. এটা কোচে রইব at NTP. Volume of gas in liter at NTP divided by 22.4 liter. So these are the basically three formulae used in order to calculate the number of moles. Quickly note kar diye friend. Up to this, if any doubt, quickly raise your hand or write in the chat box. Okay. Okay, done. Okay, the student likhichi, if in question NTP or STP is not mentioned, what we have to assume? See, student, if NTP and STP are not mentioned, that means it can be any other condition. So ताप हमें use करिए PV equal to NRT. Okay, PV equal to NRT. So question में definitely condition mention है तो नहले हमें सबू बड़े हम केमती लिख पारिए तो सबू NTP तो के STP तो it is not mandatory कि सबू NTP के STP रही है ना. So it is different pressure देइथिबो, different temperature देइथिबो. So हे करे. So question हम discuss करिबा. So student एपर लेक्चर लो. तापरे next question लेखो. Calculate, say PV equal to NRT formula पर question discuss करिबा. Calculate the number of molecules of carbon dioxide present at 5 atm pressure and at 27 degree centigrade. 27 degree centigrade. Okay. Then calculate kalo. For the volume, two liter. For the volume of 2 liter. Here the first question. Second question. Which contains maximum number of atoms? Which contains maximum number of atoms? (15 gram of H2, 3 moles of H2CO3, 2 moles of glucose, 224 liter of SO2 at NTP. Okay, then ticket time लो, जितने में time लियो, ये दिला question try करो. Calculate first question. Calculate number of molecules of carbon dioxide present at 5 atm pressure and at 27 degree centigrade for the volume of 2 liter. Then second, which contains maximum number of atoms? 15 gram of hydrogen, 3 mole of H2CO3, 2 mole of glucose, and 224 liter of SO2 at NTP. Okay. ताले में फटाफट ये दिला क्वेश्चन ट्राई करो. तापरे आ गोटे लास्ट फार्मूला अछि कार ना मोल रो जोटा अछि हमें कहिबा
ग्राम atom ग्राम molecule ग्राम ion सेटा होते लास्ट फॉर्मूला अछि सो विथ दिस हमें फर्स्ट सेशन आज ओवर करिवा सेकंड सेशन तबर आफ्टर 10-15 मिनिट्स ब्रेक हमें सेकंड सेशन जेतो स्टार्ट करिवा सेतो हमें डिस्कस करिवा कंसंट्रेशन यूनिट जोरा तम पढिथो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मोलारिटी ये सब हमें कंसंट्रेशन यूनिट आज डिस्कस करिवा ओके सो ये दिरा क्वेश्चन कर दियो any difficulty write in the chat box I hope all of you are doing. Second question, exact number calculate करिया दरकार नहीं स्टूडेंट सो ए टाइप रो क्वेश्चन आसिले ताको अवॉइड नंबर रो रेस्पेक्ट रे ताके एक्सप्रेस करिवो अरे एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट कले लॉन्ग माने बहुत अधिक टाइम लागिवो आ तादरे रॉन्ग होवार भी चांसेस अछि हैला डन ओके गुड सो प्रतीक्षा that is 2.505 10 to 23 electrons which question एटे मॉलिक्यूल्स पचराई छी फर्स्ट रे मॉलिक्यूल कैलकुलेट करो okay 10 to the power 22 molecules कृष्ण भाई दास okay so हमें देखियो ताको सर नंबर 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ okay so value of r मुझे जेमत कहिथिले सबोल हमें यदि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर देछि ताले अबे कोई वैल्यू यूज करबा 0.081 ताको अप्रोक्सीमेटली 1/12 बोल नहीं करिवो okay first question है 2.43 in 10 to 23 first question कौन पचारछि number of molecules okay सर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करी तापर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करी परिबा फर्स्ट क्वेश्चन रे ओके सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट ट्राई करो लास्ट 2 मिनिट्स देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ओके स्टूडेंट्स मोस्ट स्टूडेंट रेस्पोंड करछो दैट इज नाइस ओके seriously Mr 2.44 into 10 to 23 first question okay
So Lakshmipriya Datta, 1.22 10 to 23, number 1 question. Okay. I may check kariba student. So last 1 minute. तापर हमें दीटा क्वेश्चन डिस्कस करिबा. जेमन कहथिली फर्स्ट क्वेश्चन तुमको यूज करिया पड़े पीवी इक्वल एनआरटी और सेकंड क्वेश्चन तमे जहां भी एटम्स कैलकुलेट करछो ताको एनए रो टर्म रे कैलकुलेट करो. एवोगाड्रो नंबर टर्म रे ही कैलकुलेट करो. ओके. सो सेकंड क्वेश्चन रो आंसर सी. ओके देखियो स्टूडेंट. हम तो रैंडमली क्वेश्चन देछि आंसर एग्जैक्टली मो पारे भी नाही. हम देखियो चेक करिवा तम सामने रे डिस्कशन करिवा. ओके. So first देछि प्रेशर 5 atm, टेम्परेचर 2070 सेंटीग्रेड. So ता माने टेम्परेचर को हम कोथे कन्वर्ट करिया पड़ियो एसआई यूनिट दैट इज केल्विन में कन्वर्ट करिया पड़ियो और वॉल्यूम इज 2 लीटर. ठीक है. ताले हम देखिबा फर्स्ट क्वेश्चन. सो लक्ष्य रहता. ओके. आंसर सी सेकंड क्वेश्चन. ओके डिस्कस करिए स्टूडेंट. So first question. So we have to use the formula PV equal to nRT or N equal to PV upon RT. So pressure is given as 5, temperature volume is given as 2, temperature Kelvin NL 300 into R is 1 by 12 हम नहीं परिवा. Okay. So 1 by 12 नहीं परिवा. So हमें यदि आपको cancel करिवा then it will be 25. 25, then this is 5, so still 2 by 5 mole. 2 by 5 mole. Carbon dioxide. So number of molecules केता होगा? ना number of moles into Avogadro number. कहीं की 1 mole contains Avogadro number of molecules. That 2 by 5 mole contain 2 by 5 into Avogadro number of molecules. That is 2 by 5 into 6.011 10 to the power 23. So as 1.2 0 something as 0. So लिख परिवा 2.4 into 10 to the power 23 molecules. Okay. So it is coming 2.4. Student लिखी भी थिलो 2.4 into 10 to the power 23 molecules. So how many of you got this answer? Student fटाफट. Okay, good. बहुत स्टूडेंट पाइथिले स्मृति प्रतीशा. ओके गुड. आ अलगा स्टूडेंट भी किछि लिखिथिल आंसर. देन सेकंड क्वेश्चन. जेम तो कहिथिली सेकंड क्वेश्चन रे तमे नंबर ऑफ एटम्स को को टर्म रे रखिबो ना एवोगाड्रो नंबर ऑफ टर्म रे रखिबो. ओके बहुत स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन आंसर हरप्रिया बेहरा बी आउ अलगा बहुत पिला आंसर सी भी लिखछन. ओके चेक कर दो स्टूडेंट जस्ट गोटे मिनिट रे. So it is 15 gram of H2, 3 mole of H2CO3. Okay. So 15 gram of H2 means option A जो देखिबा number of moles केता होबो? Number of moles that is हमें लिख फेरे given mass by molar mass of H2 that is 7.5. ताले number of atoms केता होबो ना number of moles per molecule 2 atom अछि into Na, that is 15 into Na. Okay, that is 15 into Na. ता माने हम कहिबा so 15 ग्राम रे केते atoms अछंती H2 रो ना 15 into Na. Then second कोन दैछि the second is 3 mole of H2CO3. So 3 moles, number of moles equal to 3. Okay, so that is 3 Na molecules. 1 mole Na molecules. 3 moles 3 Na molecules. तापरे देखियो हमें number of atoms केता होबो H2CO3. H2 2 plus C 3 plus O3 6. So 6 into 3 Na. So that is 18 Na atoms.
हैला ये ला ऑप्शन बी तापर देखिबा ऑप्शन सी रे कोन थिला 2 मोल ऑफ ग्लूकोज 2 मोल ऑफ ग्लूकोज ऑप्शन सी so number of moles is 2 so atoms केता हबो ना 2 into Na molecule into glucose formula ला C6H12O6 so C6H12O6 means for molecule how many atoms are there 24 that is 48 into Na atoms are present that is option C our last one thila 224 liter of SO2 okay the number of moles keta hijibo now volume at NTP divided by this so asla 10 mole that is 10 Na molecules or SO2 means 33 atoms per molecule 30 Na atoms okay 30 Na atoms tell ko first la 15 Na second 18 Na third 48 Na fourth la 30 Na so what is the answer is C most students C answer deithilo good very good student so most of you got the right answer okay okay good Deva Prasad Mahapatra also C then last formula for mole last formula is 1 gram molecule 1 gram atom 1 gram ion all are equivalent to 1 mole 1 gram molecule 1 gram atom 1 gram ion all are equivalent to 1 mole okay students ta mane ame dekhiba for example ame et kaiba jodi one molecule nele let's say CH4 so lekhiba 16 gram of CH4 that is equal to 1 mole okay gram of CH4 molecule jodi lekhiba 16 gram of CH4 molecule that is equal to 1 mole okay jodi ame ethi just change kar deba 16 gram aga molecule nei asba molecule of CH4 that is equal to 16 moles बुझा पड़ला similarly ame jodi naba sodium mass is 23 so 23 gram of sodium atom equal to 1 mole ताको जे हम ट्विस्ट कर लिखवा 23 gram atom of sodium that is equal to 23 moles now ion suppose हमने ले carbonate mass होती 60 so 60 gram of CO3 minus ions that is equal to 1 mole so 60 then हमने लिखा 60 gram ions of CO3 minus that is equivalent to 60 moles okay then a last formula बुझा पड़ला 1 gram molecule 1 gram atom 1 gram ion all are equivalent to 1 mole so eta tomro example rahila so quickly note कर दिया with this we have finished the mole concept जोटा कि first part थिला आप हमें 10-15 minutes break नबा so तमे को जीवा दरकार नहीं so keep all of you log in after the break we are going to meet in the second session